Hello my dear kids, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 5. This is your book, Joyful Mathematics, and today we are going to start a new chapter. This is chapter number 4 of your book, and the name of the chapter is Addition and Subtraction. So let's see what's new in this chapter. Here you can see there's a picture of a market. Here number of books are there. Read the statement about the book fair and solve. So book fair hai and we have to read the statement. In a fair there are 1790 males and 1325 females. How many people are there in the book fair? So एक book fair है जिसमें इतने males और इतने females. So what we have to do, we have to find out कि total कितने लोग हैं वहाँ पे. So how many people are there, वो हमें find out करना है. So हमने 1790 में 1325 को last कर दिया. So what we get? We get 3115 people over there. 3115 people. Similarly, next question is, at the book fair there are these many books in Hindi language and these many books in English language. How many more books of English language than Hindi books language are there? So यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश की बुक ज़्यादा है और हिंदी की बुक कम है. तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि कितनी इंग्लिश की बुक हिंदी की बुक से ज़्यादा है. तो what we have to do, we have to subtract these two numbers with each other. So you have to do this on your own. Now let's learn addition. When we add two or more than two numbers, जब हम two या फिर उससे दो ज़्यादा numbers को हम add करते हैं, each number is known as addend. हर एक number को addend कहते हैं and the result is called total. और result को क्या कहते हैं? Total. Sum या फिर sum total. Numbers of 7 digits or more are added in the same way. So ये जो numbers होते हैं 7 digit वाले, इन्हें भी add किया जाता है इसी तरीके से. And we add the 6 digit number. और हम क्या करते हैं? 6 digit numbers को add करते हैं. Now what are the properties of addition? Addition की क्या क्या properties हैं? When the order of the addend is changed, the sum remains the same. अगर हमने addend के order को change कर दिया तो भी sum वही रहेगा. For example, this is the first number and this is the second number. दोनों को add करने पे answer is 5 lakh. अब हमने क्या किया? 3 lakh को 1 lakh की पोजीशन पे रख दिया और 1 lakh को 3 lakh की पोजीशन पे रख दिया. दोनों addends की पोजीशन को change कर दिया. Then also we get the same answer. So if we interchange their places, then also both are equal. Now the second property says the sum of 0 and the number is the number itself. अगर हमने किसी भी number में 0 को add किया तो same number we are going to get. वही number हमें मिलेगा. Third property says even if the grouping of addends is changed, अगर हमने group को change किया addends के, then also the sum remains the same. तो इस केस में भी क्या होगा? ये जो सम है इनको ऐड करने पे जो आता है वो सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, पहले हमने इन दोनों नंबर्स के ग्रुप बनाए तो आंसर आया ये. अब हम जो है 6900 का ग्रुप बना रहे हैं तो भी आंसर सेम है. अब हमने 3 इन दोनों का ग्रुप बनाया तो भी आंसर सेम. तो इसका मतलब अगर हम किसी का भी ग्रुप बनाएं आंसर विल बी द सेम, इट विल नॉट चेंज. So these are the 3 properties. I hope you have understood it. Now let's do the exercise 4.1. Here when we add any number to 0, we will get the number, same number. So here the answer is 75,638. Now if we add 1 to this number, one digit will increase. So 9 plus 1 is 0. Again 0, 9 plus 1 0, 9 plus 1 0, 9 plus 1 10. So here the answer is 1 lakh.
Now similarly, let's do this one. Here it is saying 40,000 plus 750 plus 391 is equal to 750, 391. So what will come here? Here it will come 40,560 only. I hope this is clear. Similarly, I have to complete the rest of the questions. Now, let's learn addition of large numbers. Large numbers को कैसे add करते हैं? Adding the large numbers is same as adding the small number. जैसे हम large numbers को भी हम वैसे add करते हैं जैसे हम small numbers को करते हैं. To find sum, we should first arrange the addends in column. हमें सबसे पहले add करना है तो हमें उन्हें columns में लगाना होगा. Start adding from ones place. हमेशा ones के place से add करना चाहिए. And then move to the tens and so on. Regroup if necessary. अगर आपको लगता है कि regrouping की जरूरत है तो आप regroup भी कर सकते हैं. Now here an example is given. You have to add this, this and this number. 3 numbers दिए गए हैं, हमें इन्हें add करना है. So हमने इन्हें groups में लिख लिया है, ऊपर हमने इनकी place value लिख दी है. अब जो है we are adding it, so we get this number as our answer. So we have to start from the ones place और फिर धीरे धीरे हम आगे जाएंगे. Now finding the missing number. Missing number अगर आपको ढूंढना है, for example क्वेश्चन दिया उसमें number missing है, so how can we find that? Let's learn to find the missing digits which follow both the pattern of addition and subtraction. Missing digit को find out करेंगे जिसमें addition और subtraction दोनों की pattern को follow करते हैं. Find the missing number and fill the blank boxes. यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको missing digit को find out करना है और वो कैसे करते हैं? Let's learn. So here you can see what all steps we have to follow. First we have to start from the ones place. So यहाँ पे एक नंबर दिया गया है कि 9 आंसर चाहिए हमें और 8 है, तो क्या ऐड करेंगे कि 9 आंसर मिल गया? So हमने इसमें 1 ऐड किया तो यहाँ पे 9 आंसर आया. अब हम 10th प्लेस पे जाते हैं तो 4, 8 आंसर होना चाहिए, तो 4 में हम क्या ऐड करेंगे? So we will subtract 8 minus 4, we will get 4. Similarly अब हमें 6 चाहिए तो हमने 8 में से 4 को subtract किया, we get this answer. So जब हम 100 प्लेस पे आते हैं children, we can see that 8 is written here. अब हमें 4 आंसर चाहिए, so what we will subtract from 8 that we get 4 answer. So what we will add in 8 that we get 4 answer. So 4 means we want 14. So 14 के लिए हमें 6 ऐड करना होगा ताकि हमें 14 यहाँ पे मिल सके. Now because here it is 14, 1 will be carried forward here. So 5 plus 3 plus 1 is 9. Again 7 plus 9 is 6. It's already given. Now अब जो है यहाँ पे 6 आंसर आया है, but 6 will not come क्योंकि यहाँ 6 है तो 1 will be carried forward. Now 6 plus 6 12 plus 1 13. 3 will come, 1 is carried. Now 5 plus 8 plus 1 which is 14. 4 here, 1 carried. 7 plus 1 plus 1 which is 9. So this is the step that you have to follow when we complete these type of questions. Now let's do this exercise 4.2. Here let's add this one first. So 9 plus 1 is 10. 9. Next is again 10. So here the answer is 1,13,60,300. Now similarly let's do this E part. Let's do this E question. So children, here the answer is 4,73,20,871. So this is your answer. Similarly you have to complete the rest of the questions. Now let's move on to question number 2. Find the sum of the following numbers. So here 2 group of numbers are given. We have to rearrange them first and then we have to find out their sums. So let's rearrange it. So this is the first number. Now we have to add 5,700
39. Let's add these two numbers. So children, here the answer is 50,83,742. So this is the answer. Now let's move on to another question that's given here. Let's add this if question number F. So this is the first set of number. So these are the numbers. The numbers are 4,83,275 plus 13,54,036 and 65,838. Now let's add all these numbers together. So children, after adding we get this answer. The answer is 90,03,149. So similarly, you have to do the rest of the questions that are given to you. I hope this is clear. Now let's move on to this question number 3. Here we have to find out the missing numbers. So here it is 1. अब हमें 0 चाहिए आंसर में. So what we are going to add here? So obviously we are going to add 9. तो 9 plus 1 will be 10. तो 0 यहाँ लिखेंगे और 1 हो जाएगा 10. So 7 plus 1 हो गया 8. अब 2 चाहिए हमें आंसर मीन्स 12. तो 12 minus 8 will be 4. So अब हम ऐड करके देखते हैं. 7 plus 1 8 and 8 plus 4 is 12. तो 1 कैरी कर लेते हैं फिर से ना. 4 आंसर चाहिए हमें. तो हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे? 2 plus 1 3 तो पहले से है. अब 1 और ऐड करके देखते हैं. Yes, it's 4 now. Now 5 plus 2 7. अब 3 यहाँ पे आंसर चाहिए. 1 लिखा हुआ है तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पे? तो आंसर आ जाएगा 2. So children, like this we have to do the rest. Now let's do the C part again. You have to do B by yourself. चलो अब यहाँ पे 4 लिखा है. 7 चाहिए हमें. तो 7 के लिए हमें 3 को ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट 4 plus 3 7. अब यहाँ 5 है. 4 आंसर चाहिए मीन्स 14 चाहिए. तो 14 में से हम 5 को माइनस कर देते हैं. सो 9. Now let's add 9 plus 5. It's 40. Now अब 14 के लिए 1 को कैरी कर देते हैं. सो 3 plus 1 4 हो गया और हमें क्या चाहिए? 5. तो 1 ऐड कर देते हैं. सो बन गया 3 4 5. Now 2 है. 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे? 8 को ऐड कर देते हैं. सो 8 plus 2 क्या बन गया? 10. तो 0 यहाँ लिख दिया. 1 को हमने कैरी कर दिया. Now 4 plus 3 is 7 and 7 plus 1 is 8. So here this is your answer. Similarly, you have to do this B part on your own. Now let's do some story sums. In Delhi, these many 7 lakh students took an exam, and in Mumbai 56 lakh students took the same exam. तो दिल्ली में 7 लाख बच्चों ने अपीयर किया था उस एग्जाम में और मुंबई में 56 लाख बच्चे गए थे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक द एग्जाम ऑल टुगेदर? तो ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरा मिला के, विच मीन्स वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स. सो जब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया वी गेट दिस आंसर. सो इट्स 64,23,600 students participated in this exam. Now let's do this exercise 4.3. So let's do the first question. In an election, candidate A got these many votes, more than candidate B. मतलब candidate B को जो वोट मिले थे उससे इतने ज्यादा वोट्स मिले हैं A को. If candidate B got these many votes, अगर B को इतने वोट्स मिले हैं तो how many votes did candidate A get? A को कितने मिले हैं? ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें ये नहीं पता A को कितने वोट्स मिले हैं हमें, बट ये पता है कि B के कितने वोट्स हैं. तो B के वोट्स हैं टोटल 43, 45 and 400. क्लियर? तो B के वोट्स हमें पता है और ये भी पता है
कि ए को जो है इतने ज्यादा मिले हैं बी से, मीन्स ए जो है जीत चुका है, तो ए वाले वोट्स को हम इसमें प्लस कर देते हैं, ए को जो ज्यादा मिले हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी विल गेट द वोट्स ऑफ ए. तो अब हम इसमें जब हम ऐड करेंगे इस नंबर को, लेट्स ऐड इट हियर. ए के वोट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम ऐड करेंगे. सो जो टोटल वोट्स ए को मिले हैं वो है 45,81,867. So these many votes are for A. I hope this is clear. Similarly, let's do this question number 3. Mr. Toma bought a house for 34 lakhs and a computer for 46,000. तो मिस्टर तोमर ने एक घर खरीदा और एक कंप्यूटर खरीदा. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, उन्होंने पूरे मिला के कितने पैसे खर्च किए. सो हमें क्या करना है, दोनों ही एक्सपेंसेस को ऐड करना है. सो 46,000 एंड 450 को हम इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा टोटल उन्होंने कितने पैसे खर्च किए थे. सो यहाँ पे चिल्ड्रन द टोटल मनी दैट ही स्पेंट इज 34,72,050 rupees. So this was the money that he spent. Now let's do this fifth question. A town library has these many Hindi books, these many English books and these many books of other languages. Calculate the total number of books in the library. तो हम इन तीनों को ऐड करते हैं. So let's do it. 23,476 हिंदी बुक. Now English book थी 28,485 और other book थी 10,924. So when we add all these numbers we get, so children there are total 62,885 books. There are total these many books in that library. I hope this is clear. Similarly, you have to complete the rest of the questions. Now let's learn subtraction. Subtraction means to take one number or quantity from another. So हमें क्या करना है, subtraction का मतलब है किसी चीज में से कोई चीज निकालनी है. So the population of a town is 3 lakh. एक town है जिसकी population है 3 lakh. Out of these 1,62,280 are males. यहाँ पे इतने males है. How many females are there? So total हमें पता है, males पता है, तो जब हम दोनों को subtract करेंगे we will get the total number of females. So these are the number of females. इसे हम ऐसे ही subtract करेंगे जैसे हम ones place से start करते हैं. Now what are the properties of subtraction? The order of number involved in subtraction cannot be changed. ये जो order of numbers है उन्हें हम change नहीं कर सकते. ये नहीं कि ऊपर वाले को नीचे कर दिया और नीचे वाले को ऊपर कर दिया. When a number is subtracted from itself, the difference is 0. जब एक नंबर को खुद से subtract करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0. Means 45,000 को 45,000 से हमने subtract किया तो आंसर is 0. When 0 is subtracted from any number, अगर हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो वही नंबर आंसर आएगा. Now fourth property is when 1 is subtracted from a number. जब किसी भी नंबर से 1 subtract करते हैं तो क्या आएगा, जो डिफरेंस है वो उसका प्रेडिसेसर होगा of the minutant. Now here let's do this exercise 4.4. So here you can see जब हम किसी भी नंबर से 0 को subtract करेंगे we will get the same number as answer. Similarly हम किसी भी नंबर में से अगर 0 को subtract करेंगे we will get the same number. Similarly you have to do the rest two questions. Now let's learn subtraction of large numbers. Large numbers का subtraction कैसे कर सकते हैं. In subtraction we follow the steps. कुछ steps को हम follow करते हैं. पहला है write the large number of the given two digits according to the equation. जो biggest number है
उसे जो है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे. राइट स्मॉलर नंबर बिलो फेसिंग 1 to 1, tens to tens and so on. और जो स्मॉलर नंबर है उसे वंस टेंस के अकॉर्डिंग हमें लिखना है. स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड मूव ऑन टू दी. हमें जो वंस प्लेस से सब्ट्रैक्ट करना है और लेफ्ट की तरफ चलते जाना है. रीग्रुप इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है तो रीग्रुपिंग भी करें. नाउ लेट्स learn it quickly with an example. Here you have to subtract this from this. So this is the biggest number, इसे हम ऊपर लिखेंगे, smallest को हम नीचे लिखेंगे. Let's do it. So यहाँ पे हमने bigger number ऊपर लिखा है, smallest को नीचे लिखा है. अब हम subtract कर रहे हैं. So how can we subtract? 2 में से क्या 7 subtract हो सकता है? No, क्योंकि 2 तो small number है, 2 में से 7 हम subtract नहीं कर सकते. So अब 2 ने क्या किया? Borrow लिया 7 से, तो इसके पास 6 हो गया, यहाँ पे 12 आ गया. So 12 minus 7 is 5. अगेन अब 6 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो अब 6 ने बोरो किया, तो अब 6 के पास हो गया 16. 16 minus 8 is 8. अब 7 में से भी 9 नहीं कट सकता, तो जो है 7 ने भी बोरो किया, एंड सेम प्रोसेस कंटिन्यू, एंड देन वी हैव गॉट दिस आंसर. Similarly, we have to do this question that is in front of us. Now let's learn the relation between addition and subtraction. Addition और subtraction के बीच में क्या relation है? Subtract this from this and check your answer. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इस नंबर को इस दूसरे नंबर से subtract करना है और अपने आंसर को चेक करना है. So bigger number को ऊपर लिख दिया हमने, smaller को नीचे लिख दिया, दोनों को subtract किया, answer is this. अब relation क्या पता चलेगा? रिलेशन ये है कि ये जो हमारा आंसर है ये हम इस स्मॉलर नंबर में ऐड करेंगे. तो इस आंसर को हमने इस स्मॉलर नंबर में जब ऐड किया, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? वी विल गेट दिस बिगर नंबर एज द आंसर. आप देखो ये बिगर नंबर आपको आंसर के रूप में मिला है. इसका मतलब ये है कि जब भी हम आंसर से स्मॉलर नंबर को ऐड करेंगे, वी विल ऑलवेज गेट द बिगर नंबर. So this is the relation between addition and subtraction. So here subtrahend plus difference is equal to minuend. Hence subtraction is correct. अगर ये same answer आता है इसके बराबर, इसका मतलब our calculation is correct. Now चलिए let's learn finding the missing number. यहाँ पे एक group of question दिया गया है. You have to find the missing number. 9 is given, 6 हमें आंसर चाहिए, तो हमने क्या करना है? ऊपर वाले को फाइंड आउट करना है. सो देयर इज अ प्रोसेस गिवन. सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा बिगेस्ट नंबर है जिसमें से हम 9 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें जो आंसर मिलेगा 6. तो यहाँ पे अब हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमने जब इसकी पोजीशन चेंज की, LHS RHS किया, तो ये 9 को जब हम 6 के पास ले गए प्लस बन गया. So 9 plus 6 is 15. So यहाँ पे 15 होना चाहिए, but 15 तो हम नहीं लिख सकते, तो हमने 5 लिख दिया है. Now 5 minus 9 is 6. Sorry, 15 minus 9 is 6. अब 15 है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इसे 1 दिया था, तो ये 5 बन जाएगा. अब 5 minus 3 is 2. अब अगेन जो है यहाँ पे 0 है, 0 में से 8 कट नहीं हो सकता, सो 0 ने बोरो किया 9 से. अब जो है ये बन गया 10. 10 minus 8 is 2. अब 8 में से 6 कट गया 2. नाउ हियर इज 2. 2 में से 6 नहीं कट कर सकते, तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जो इसे 1 बोरो करे, जिससे ये 1 बोरो कर सकता है. सो पहले चलिए 1 बोरो करके हम कंप्लीट कर लेते हैं. नाउ यहाँ पे 2 था, एक नंबर बोरो भी किया है. कौन सा ऐसा नंबर है? 4 plus 2 is 6. तो मतलब 6 आना चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर 7 था, तभी तो उसने एक बोरो दिया है, तो यहाँ पे 6 बन गया. So 6 minus 2 is 4. Again 14 minus 7 is 7, and 7 minus 0 is 7. So by doing a few more questions, we will easily understand this technique. Now let's do the subtraction of the numbers. So children, let's start exercise number 4.5.
So here we have to subtract this given number. 2 minus 2 is 0. Now 1 में से 5 नहीं कट होगा तो इसने borrow ले लिया. So now we have to cut 11 में से 5. So the answer is 6. Now 3 minus 1 is 2. 5 minus 4 is 1. अब 12 में से 3 कट करेंगे. So 12 minus 3 is 9. Now 2 में से इतने कट होगा. It's 6 here. It's 12. 12 minus 8 is 4. And again 6 minus 4 is 2. So this is our answer that we get. So the answer is 24,91,260. Similarly, let's do another question here. Let's do this E part. 7 minus 4 is 3. 10 minus 2 is 8. 2 crore 54 lakh 48,483. So this is your answer. Similarly, you have to do the rest questions that are given here. Now let's move on to question number 2. Find the difference. Here we have to categorize these in the columns and then we have to subtract. So let's see which number is greater from these two. This is the greatest. So ये ऊपर लिखेंगे 35,63,905. And from this we are going to subtract 10,78,999. Subtract करना है इन दोनों को. Let's subtract it. So it's 15 here. So children, here the answer is 24 lakh 84,906. So this is your answer. Now let's do this question number 8. Similarly, children, you have to do the rest of the questions. So here, which one is greater? This one is greater. So let's write. Now, नीचे के सारे numbers small हैं. So we will get the same number. And 7 minus 1 is 6. So here the answer is 67 lakh 93,184. So similarly, you have to find the answer of the rest of the questions that are given here. I hope this is clear to you. Now let's move on to question number 3. Find the difference of the following numbers and also check their answer. So यहाँ पे कुछ numbers दिए गए हैं, हमें उन्हें subtract करना है and then we have to check the answer also. Let's do, children, this first question first. अब इन दोनों में से this one is bigger. So इसे लिखते हैं पहले. So children, here this is our answer that we get. अब हमें क्या करना है? We have to check the answer. ये हमारा आंसर सही है या नहीं? We have to check it. कैसे चेक करना है? This and this is to be added. So let's add these numbers. 2 6 3 8 4 6 4 0 plus 1 1 4 6 8 2 6 3. So जल्दी से ऐड करते हैं. So here this is the answer. So चेक करने पे जब हमने इसको चेक किया तो this answer we get. Let's match it with the biggest number. So 3 lakh 3 crore 78 lakh 52,903. So this answer is correct. So children, this was the answer that we get. Now similarly, let's do this F part here. Let's do this one. So here the numbers are already written. Now इसके नीचे ही लिख लेते हैं. So it's 3 35 07 500. So now let's subtract these two numbers. So it will be 75. So children, this is the answer that we get. Now let's check the answer. So हमें क्या करना होगा? इस नीचे दोनों numbers को हमें add करना होगा. Let's add it. So this is the answer, children, that we get.
and let's match it. Yes, these two are the same numbers. So this means that our calculation is correct. I hope this is clear to you. Now let's move on to question number 4. Here 2 questions are given. I'll be doing one. Second one we have to do unknown. So here the first is 6 minus 4 is 2. Now 8 में से हम कौन सा number subtract करेंगे? We will get 4 here. So we are going to subtract 4. So 8 minus 4 is 4. 9 minus 6 is 3. Now 4 में से हम कौन सा number subtract करेंगे कि 3 आएगा? So यहाँ पे है 1. Now 9 minus 4. अब 9 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे we will get 5. So this is also correct. अब कौन सा नंबर है जिसमें से हम 3 subtract करेंगे we will get 6. So yes, it's 9. Now 9 minus 4 is 5. So children, this is the answer that we are getting. Now this one you have to do unknown. Now let's do some word problems. The total number of males and females in a town. So total population दी गई है. If the number of males is this much, find the number of females. Males दिए गए हैं, हमें females को find out करना है. We are going to subtract these two, and when we subtract these two numbers, we get these many number of females. Now let's move on to the second example. Raghav spent 50,000. He bought a computer. So computer खरीदा, iPod खरीदा, television खरीदा. If the cost of computer and iPod is given, अगर iPod और computer की cost दी हुई है, what is the cost of TV? तो हम क्या करेंगे? इन तीनों डिवाइसेस को खरीदने में उसके 50,000 रुपीज लग गए. तो पहले हम जो दो डिवाइसेस के प्राइस दिया है उन्हें हम ऐड कर देंगे. सो उन दोनों को ऐड करने पे आंसर आता है 29,750. अब ये टोटल कॉस्ट हो गया कंप्यूटर और आईपॉड का. हमें टेलीविजन का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल में से इस 29,750 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया वी गेट द कॉस्ट ऑफ टीवी व्हिच इज 20,250 rupees. Similarly, let's do the exercise 4.6. Here the population of a town is this much. एक टाउन है जिसमें इतनी पॉपुलेशन है. मेल्स दिए गए हैं एंड फीमेल्स आपको निकालनी है. So do this question on your own. Let's do the second one. There are these many basket of mango. Mango कितने basket हैं? An apple in a cold storage. Means एक cold storage जिसमें mango और apple के इतने baskets हैं. If the number of baskets and mango are these many, find the number of basket of apples in the store. हमें जो है apple के baskets निकालने हैं. सो यहाँ पे हमें टोटल दिया गया है वो है 19567891. सो दिस इज द टोटल बास्केट. नाउ अब हम इसमें से मैंगो के बास्केट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो मैंगो के बास्केट में है सो मैंगो के बास्केट में के इतने बास्केट हैं. तो अब एप्पल के बास्केट निकलेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने. So here the total number of baskets are 1 and 5 times 0 and 1,12,00,000 baskets. So these are the number of baskets. Now the sum of two numbers is given here. Find the smaller. If the smaller number is given, find the greater number. इसमें भी हम इन दोनों को subtract करेंगे. We will get the greater number. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड इन इलेक्शन. 2 कैंडिडेट थे जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे थे. फर्स्ट कैंडिडेट गॉट दिस मेनी वोट्स एंड द सेकंड कैंडिडेट गॉट दिस मेनी वोट्स. हु वन द इलेक्शन एंड बाय हाउ मच? तो हमें देखना है कि पहला जो ए कैंडिडेट है उसे इतने वोट्स मिले, बी को मिले टोटल इतने वोट्स. किसके वोट्स ज्यादा हैं? सो बी के ज्यादा हैं. अब पूछ रहा है कितने ज्यादा हैं, तो हम ए में से मीन्स बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जितने भी वोट्स एक्स्ट्रा आएंगे वो ज्यादा वोट्स हैं. सिमिलरली लेट्स डू दिस फिफ्थ वन. अ गोडाउन हैज दीज मेनी बैग्स ऑफ राइस. गोडाउन में इतने राइस के बैग्स हैं, इतने व्हीट के बैग्स हैं और इतने शुगर के बैग्स हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द गोडाउन.
हमें टोटल मिला के कितने बैग्स है वो बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों बैग्स को हम ऐड कर देंगे। Now question number 6 is Raman bought a plot of land for this to build a house. Raman ने एक प्लॉट खरीदा इतने रुपए का and he spent इतने on building the materials. उसने इतने पैसे बिल्डिंग और मटेरियल पे खर्च किए, इतने पैसे उसने लेबर चार्जेस दिए। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, उसने पूरा मिला के कितना पैसा खर्च किया। तो ये जो तीनों अमाउंट है चिल्ड्रन दैट वी हैव टू ऐड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज दिस इन ईयर 2019 एंड इट इंक्रीज बाय दिस मच नेक्स्ट ईयर। मींस इतने लोग थे एक टाउन में और अगले साल इतने लोग और आ गए। Find the population of the town in the year 2020. तो ईयर 2020 में टोटल कितना पॉपुलेशन हो गया था, तो इस ए में हमें बी को ऐड कर देना है, तो वी विल गेट द टोटल पॉपुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a manufacturer produces this much and this much shirt during 2 successive years. एक मैन्युफैक्चरर ने इतना और इतने शर्ट बनाए थे 2 सालों में। Find the total production of the manufacturer during these 2 years. इन दोनों सालों में मिला के उसने कितने शर्ट्स बनाए। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को again you have to add. So you will get the answer. I hope this is clear. So children, with this we have completed this chapter. I hope that you have understood the concept very well, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay lated.